महाराष्ट्र शासनाच्या एकूण 60 लाख बक्षिसासह सर्व राज्यांमध्ये मिळून भूपती उर्फ सोनू याच्यावर एकूण 5.5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बक्षीस जाहीर केले होते। आत्मसमर्पणानंतर पुनर्वसनासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून याला एकूण 25 लाख रुपये बक्षीस म्हणून मिळणार आहेत। तसेच दिनांक 1 जानेवारी 2025 रोजी भूपती उर्फ सोनू याची पत्नी DKZCM तारक्का सीडाम हिने माननीय मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्या समोर आत्मसमर्पण केलेले होते। माननीय मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्या प्रयत्नांमुळेच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मार्ग भरकटलेले माओवादी सदस्य आत्मसमर्पण करून ते लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामील होत आहेत व त्यांचे जीवन सुखकर होत आहे। याबद्दल आजच्या या कार्यक्रम प्रसंगी सोनू उर्फ भूपती याची पत्नी तारक्का सीडाम यांच्याकडून माननीय मुख्यमंत्री सरांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे आभार व्यक्त केले जात आहेत। यानंतर या संपूर्ण आत्मसमर्पणाच्या कार्यक्रमासाठी विशेष परिश्रम घेणारे अधिकारी व अंमलदार यांना माननीय मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्याकडून प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्यात येणार आहे। मी माननीय सरांना विनंती करतो की सरांनी आपल्या हस्ते या बक्षिसाचे वितरण करावे। यासाठी मी आमंत्रित करतो पोलीस अधीक्षक गडचिरोली श्री निलोत्पल सर, अपर पोलीस अधीक्षक अभियान श्री एम रमेश सर, विशेष अभियान पथक प्राणहिताचे प्रभारी अधिकारी सपोनी राहुल देवडे, पार्टी कमांडर ऋषी विडपी यांना। या संपूर्ण आत्मसमर्पणाच्या कार्यक्रमासाठी गडचिरोली पोलीस दलातील सर्व अधिकारी व जवान यांनी विशेष आणि अथक परिश्रम घेतलेले होते। याबद्दल माननीय सरांकडून सर्व अधिकारी व अंमलदार यांना प्रोत्साहनपर बक्षीस दिले जात आहे। खूप खूप धन्यवाद सर। यानंतर सर्व 61 आत्मसमर्पित माओवादी सदस्यांसोबत मान्यवरांचा ग्रुप फोटो घेण्यात येणार आहे। सदर ग्रुप फोटोची तयारी करण्यासाठी कृपया 5 मिनिटाचा अवधी लागणार असल्या मान्यवरांना विनंती करतो की आपण कृपया ग्रुप फोटोची तयारी होईपर्यंत मंचावर स्थानापन्न व्हावे। मी कार्यक्रमाच्या आयोजकांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया ग्रुप फोटोकरिता लवकरात लवकर तयारी पूर्ण करावी। आज रोजी आत्मसमर्पित होणारे एकूण सर्व 61 आत्मसमर्पित माओवाद्यांसोबत मान्यवरांचा ग्रुप फोटो घेण्यात येणार आहे। या सर्व आत्मसमर्पित सदस्यांना मान्यवरांच्या संविधान भेट देण्यात आली असून त्यांना त्यांच्या पुढील भविष्यासाठी शुभेच्छा देण्यात आलेल्या आहेत। तसेच या आत्मसमर्पणाच्या ग्रुप फोटो सोबतच या सर्व एकूण 61 माओवाद्यांनी शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले असल्यामुळे या शस्त्रांचा देखील या ठिकाणी प्रदर्शन केले जाणार आहे। गडचिरोली जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येने वरिष्ठ माओवादी सदस्य आपल्या शस्त्रांसह माननीय मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्या समक्ष आत्मसमर्पण करीत आहेत। मी आयोजकांना विनंती करतो की कृपया कार्यक्रमाचे बॅकड्रॉप चेंज करावे। मी कार्यक्रमाच्या टेक्निकल टीमला विनंती करतो ग्रुप फोटोची तयारी पूर्ण झाली असून मान्यवरांसोबत या सर्व आत्मसमर्पित माओवादी सदस्यांचा ग्रुप फोटो घेण्यात येत आहे।
खूप खूप धन्यवाद सर. त्यानंतर मी माननीय मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सरांना विनंती करतो. మావోయిస్టు అగ్రనేత మల్లోజుల వేణుగోపాలరావు లొంగిపోయారు. ఈ విషయాన్ని మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడ్నవీస్ స్వయంగా వెల్లడించనున్నారు. గచ్చిరోలిలోని పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో సీఎం ప్రెస్ మీట్ నిర్వహిస్తారు. मंचावर स्थानापन्न व्हावे. మావోయిస్టు పార్టీలో అగ్రనేతగా వ్యవహరించారు మల్లోజుల. మావోయిస్టు పార్టీ విధానాలపై అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తూ కొన్ని రోజుల కిందట వేణుగోపాలరావు లేఖ రాశారు. కొన్ని రోజులుగా పార్టీ అనుసరిస్తున్న విధానాలతో ఆయన విభేదిస్తున్నారు. విప్లవోద్యమాన్ని విజయవంతం చేయాలంటే ప్రజల్లోకి బహిరంగంగా వెళ్లడమే సరైన మార్గమని లేఖాస్త్రం కూడా సంధించారు. 60 మందితో కలిసి మల్లోజుల వేణుగోపాల్ లొంగిపోవడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతోంది. ఈ పరిణామం మావోయిస్టు ఉద్యమానికి ఊహించని షాక్ గా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. తాను మావోయిస్టు పార్టీ నుంచి శాశ్వతంగా వైదొలుగుతున్నట్లు వేణుగోపాల్ ప్రకటించారు. కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఇకపై పార్టీలో కొనసాగలేనని స్పష్టం చేశారు.